So we were talking about V-shaped and K-shaped recovery. So in V-shaped, after a sudden downfall, which is reflected by this, we can say the left-hand side of the alphabet V, proportionately there is a sharp recovery also. So this is by this right-hand side of the V, right half, we can say. So in certain areas, we are seeing there has been V-shaped recovery, and in certain areas there is K-shaped recovery. So K-shaped recovery means that in some areas there have been we can say sudden recovery. Some we can say ki again they saw a downfall and then they recovered back. So there was no uniform pattern of recovery, we can say. So that varies from sector to sector. So this is one example. And for example, we talk about real wages, how they recovered back, the jobs, talk about unemployment, savings rate, consumption. So in all these areas, we've seen K-shaped recovery and rebound after COVID-19. So, for example, here we have other examples also in K-shaped recovery. One is the stock market. So it continued to boom through much of the COVID-19 time period, which was again, we can say this was one of the reasons also for uh, widening of the income inequality, and you can say more creation of the wealth which has been concentrated in few individuals. So the real economy was tanking during that point of time, but counter to that, stock market was booming. So clearly it benefited the minuscule minority handful of the people only, and also in such a short time period, this was also one of the main factors behind the increase in wealth of the people. Then we can say more number of billionaires from India. Second, we talk about the listed companies, how their profits have performed. So that also increased to 7-year high, but at the same time, real wages and jobs, they were shrinking. So like one area, profits were rising, and on the other side, the jobs, real wages, they kept on declining. So this reflects K-shaped recovery. So innovation is important for sustainability is critical role. Research and development becomes important when we see in India only 0.6% of the GDP is allocated for research and development, and technological developments, astounding technological developments that have been seen. And but counter to that, the problem of the challenges, the disposal of e-waste. We're talking about, production, manufacturing of semiconductor chips, lithium ion batteries, the sodium ion batteries, and when talking about the penetration of smartphones, India is the world's second most largest manufacturer of the smartphones. So what about the e-waste disposal? So Global Innovation Index, we talk about this. So India's rank was firstly, it was 81 in 2015. Now we have jumped to 40th position in 2023. So this reflects India's performance as far as the innovation sector is concerned. And here are other examples like startups example you talk about. It is Meerkat's innovative techno tools like Chakravardhan 22. Then lifestyle for the environment movement also envisions replacing prevalent use and dispose economy. Or even when we talk about the upcycling and recycling, and also when we talk about the Swachh Bharat mission also, so that behavioral change is also important. Circular economy, defined by mindful and deliberate utilization of goods. So India has one of the largest world's food welfare program, and talking about availability of the food and accessibility of the food to the vulnerable section of the society. So the example is Pradhan Mantri uh,
Garib Kalyan Ann Yojana is one of the examples that was started during COVID-19 time period. Buying of rice and wheat. Example again, PDS is also one of the examples of this. So smartphones, how they can help as again enhancing the quality of education as far as secondary education is concerned. So talking about the ASSER report by the Pratham NGO. So it has revealed 77% are it is the number of the households. The respondents they did household work daily, and the higher proportion of girls reporting this than boys. So 9% of respondents only they had laptops and computers. But when talk about the penetration of smartphones, so 89% of the children between the age group of 14 and 18, they possess a smartphone. So even this can be a game changer, effective tool for access to education, and also the technological know-how of the generation can also help in more penetration to quality education, improving their skills. And also when talk about smartphone access and the growth of even the gaming industry, so how we can even promote the game of skills which can actually help in improving their skills which are actually required and which are in demand. Okay. So I'm talking about Enchanting Ladakh 2024. So administration of UT of Ladakh Department of Industries and Commerce. So to promote their handicrafts and different arts and crafts. So we have like Delhi Heart, we are having we organize some events which is to promote their goods, the local goods Ladakhi artisans produce. This is again significant for the local growth of the manufacturing that we actually desire for. So the growth of self-help groups is linked to this and promoting women entrepreneurship at the same time. So GI tag product, one district, one products, all of these would be they would be presented. So handicrafts and handlooms, food processing products. We have talked about sea buckthorn jams and juices, dried fruits. So there have been question also on this sea buckthorn plant and exotic fruits. So we can look for other GI tagged products. For example, here we have the Rakse Carpo apricot, which is only found there, GI tagged. And then Pashmina wood carving sea buckthorn. These are this topic we've covered. One important information is just that these drugs, the that government says to doctors that you have to mention the indication while prescribing the antimicrobials. You have to mention the reason how much dosage has to be taken in. So these are mentioned in Schedule H and Schedule H1 of the Drugs and Cosmetics Rules 1945. This has also been covered. And how this can also, apart from you talked about self-sufficiency also, it is going to be important for even improving and enhancing the agricultural productivity. So through the help of technology, gene mutations and the genetically modified crops, this technology can help in increasing the output by 25 to 30%. Line of no control. So on the one side, we say when China says that the small countries they shouldn't be bullied, when we saw the tensions between India and Maldives. Maldives cannot be bullied. You can see the newly elected president Mohammad Muzi. And this is the debt soup and the debt policy which is followed by China. So this is very ironical. चाइना एक साइड बोलता है कि बुली नहीं कर सकते हो छोटी कंट्रीज को, तो चाइना क्या करता है थ्रू द डेट diplomacy and the policy which is follows. या यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि when Maldives the current the president it is believed कि is more pro China, तो आप इंडिया के अगेंस्ट तो बोल रहे हो कि बुली नहीं कर सकते, बट चाइना भी आपके साथ यही करने वाला है.
Then global north is home to 70% of the wealth. Global wealth, global north countries की बात करते हैं, the people with 20% of the world population. So this we should know कि global south में 80% of the world population is there, but they control only 30% of the global wealth. So this was also reflecting wealth concentration and inequality. So the share of billionaires' wealth, talk about global north is 74% in global north. Share of billionaires is 65 percentage. They reside in global north. Share of population is only 21%. So five richest billionaires, according to Bloomberg, is Tesla's CEO Elon Musk, Amazon's Jeff Bezos, LVMH Chief Bernard Arnault, and Microsoft's Bill Gates and Steve Ballmer. And according to, again, Oxfam also releases the Inequality Index, Inequality Inc. report. So it says that as many 7 in 10 of the world's biggest companies, they're run by the billionaires, or they are the main shareholders. So talk about Iran, Pakistan, the attack. So from the perspective of map, we should know the locations. So this is Wansistan, Balochistan, and Sarwan. It is located here in this Balochistan province of Pakistan. And we should also know about the neighboring countries. So Strait of Hormuz, it is located here. So Subsko, it is in Balochistan province in Pakistan, and Iran, Saravan. So it is there. And we can also talk about why Balochistan is significant, why it is important. So it holds untapped mineral wealth. And what kind of minerals it is believed would be there, can be found there is copper and gold. So since we are seeing now why copper and gold becomes important, gold we are seeing the prices have been increasing compared to the demand, the supply is less. It is a scarce, we can say, expensive mineral. So gold, that is why it becomes important. And the name of the mine is also mentioned, Reko Dick mine, which is there in the district of Chagai in Pakistan. Divya? Yes, Mansi. यहाँ पर हमने देखा था कि दिल्ली हाई कोर्ट ने ऑर्डर दिया था गवर्नमेंट को कि अगर वो किसी भी तरह की सजा माफ करती है तो उस पर पूरी तरह से विचार किया जाए, उसके बाद अपने जो अधिकार है उनका उपयोग किया जाए। यहाँ है कि जो 70 वर्ष की आयु या फिर उससे ज्यादा बुजुर्ग इंसान है जो कि पूर्ण रूप से सशक्त नहीं है अपना ध्यान रखने के लिए, उन्हें उनकी कैद को समाप्त कर दिया जाएगा और उन्हें मुक्त कर दिया जाएगा। लेकिन इसके अंदर ये रखा गया है कि जिन्हें डेथ पेनल्टी मिली है या उम्र कैद है या फिर जो आतंकवादी मामलों से और पोक्सो मामलों से संबंधित है, उनके लिए ये नियम लागू नहीं होगा। अगर हम बात करें किस लिए रखा गया है, तो मानवीय दृष्टि को देखते हुए कि मानव अधिकार के अनुसार उनके लिए रखा गया है। अगर जेल सुधार अधिनियम 1982-83 में मुला समिति और मॉडर्न जेल अधिनियम 2003 के तहत इसको किया गया है। तो मुला समिति याद रख सकते हैं, जेल रिफॉर्म से संबंधित है। सड़क हादसे और कमजोर व्यवस्था, जब हम देखते हैं कि 2022 की रिपोर्ट के अनुसार 4,60,000 के हादसे सड़क दुर्घटना रिपोर्टेड हुई है, जिसमें हम देखते हैं कि 1,60,000 के आसपास लोगों की मृत्यु हुई है। इनके कारण क्या है? इनके कारण है जो कमजोर व्यवस्था है और दूसरा जो नियमों का पालन नहीं किया जाता, जिसमें हम देखते हैं कि जिसके कारण दुर्घटना होती है। जब हम बात करते हैं नियमों के पालन की, तो सीट बेल्ट ना लगाने के कारण 40 लाख लोगों की दुर्घटना होती है और बिना हेलमेट पहनने की वजह से 94,000 लोग घायल होते हैं, फिर वो उनकी मृत्यु हो जाती है। तो नियमों का पालन करना भी अनिवार्य है। जब हम व्यवस्था की बात करते हैं कि किस तरह से
देखा जाता है कि जो यूनाइटेड नेशन के स्टैंडर्ड्स है उनके अनुसार शून्य दुर्घटना डिजाइन के आधार पर इस तरह से रोड का निर्माण किया जाना चाहिए जो जिसमें कट कम हो, या फिर जो यू टर्न है उनकी संख्या कम हो, जो दूर तक दृष्टि रखने में स्पष्ट रूप से कारगर हो, जिनमें उतार चढ़ाव के अगर मोड़ दिए जा रहे हैं तो वो पहले से ही बताए जाए कि यहाँ पर है। उसके अलावा हम देखते हैं कि किस तरह से जो गांव है उनके वहां से जो रोड है नेशनल हाईवे उनमें से रास्ते बना लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बीच में से जो पैदल यात्री या फिर बाइक है या फिर कार का उसमें एंट्री करवाई जाती है, जिसकी वजह से भी दुर्घटना देखने के लिए मिलती है। इसके अलावा हम देखते हैं कि हाईवे पर जो लाइन डिवाइड होती है कि बड़े वाहनों के लिए है, ये कार के लिए है, या ये बाइक के लिए, तो उस नियम का भी फॉलो नहीं किया जाता उन लाइनों के अनुसार, उसकी वजह से भी हादसे देखने के लिए मिलते हैं। तो इन सभी कारणों पर काम करने की आवश्यकता है। जब हम देखते हैं कि आईपीसी में क्या प्रावधान किए गए हैं, तो धारा 279, 337, 338 के तहत दिया गया है, जिसमें यह है कि आरोपी को जमानत दे सकते हैं लेकिन उसको जुर्माना देना पड़ेगा। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो 304A के तहत उसे 2 साल तक का सजा का प्रावधान है, जिसके लिए अधिकतर मामले में हम देखते हैं कि वो आरोपी पकड़ा ही नहीं जाता, क्योंकि सिर्फ 50% को ही इसकी सजा मिलती है। तो उसके लिए नया हिट एंड रन कानून भी लाया गया है, जिसमें हमने देखा था कि 10 साल तक की सजा और 7 लाख रुपए का जुर्माना है, क्योंकि जो दुर्घटना में अधिकतर मौत होती है उनका कारण होता है कि उन्हें जो स्वास्थ्य सेवाएं, जो उपचार मिलना चाहिए वो समय पर नहीं मिल पाता। ये सबसे बड़ा कारण है। तो उन्हें इलाज प्रदान कराया जाए, और जो नेशनल हाईवे है वहां पर भी टूल के आसपास या फिर वहां पर इस तरह के प्रावधान किए जाए कि अगर कोई दुर्घटना होती है तो उनके पास शीघ्र से पहुंचा जा सके। तो इन सभी स्थितियों के अनुसार व्यवस्था करनी होगी। दूसरा हम देखते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था कि हाईवेज पर जो शराब है उनकी दुकान या कोई भी नशीले पदार्थ का जो शॉप्स है वो नहीं होगी, लेकिन उसके बाद भी हम देखते हैं जो उनके बैनर है या फिर जो उनके प्रमोशन के लिए है वो दिखाई लगे रहते हैं और उनका रास्ता बताते हैं कि यहाँ पर है उस तरह से। तो वो भी एक रीजन होते हैं कि जिसकी वजह से एक्सीडेंट होते हैं। तो उन सभी कारणों पर काम करने की आवश्यकता है, तभी जो सड़क हादसे होते हैं उनको रोका जा सकता है। अगर हम विश्व में देखें तो 108 देशों ने यह निर्णय लिया था कि वह हर वर्ष कार्य करेंगे और 10% तक जो सड़क हादसे हैं उन्हें कम करने की कोशिश करेंगे। लेकिन जब हम भारत की बात करते हैं तो इसमें हर साल 10% बढ़ोतरी देखने के लिए मिलती है, तो उसको कम करने की आवश्यकता है। मानसी स्क्रॉल कर दो। कल्प मेधा नहीं कवर करना? रेडी कर दिया नहीं, आपका मैं नेक्स्ट। तो कल्प मेधा शिक्षा ने ऐसी बहुत बड़ी आबादी पैदा की है जो पढ़ सकती है, पर यह नहीं पहचान सकती कि क्या पढ़ने लायक है। जीएम टोलवेन। औशिक। सचिन। मानसी आप बता हाँ, दीजिए। मतलब ये सही लिखा हुआ है कि शिक्षा में बहुत बड़ी आबादी ऐसी है जो पढ़ सकते हो। तो खाली आप पढ़ सकते हो उसका मतलब एजुकेशन नहीं होता है। आपके अंदर इतनी स्किल्स भी होनी चाहिए कि आप आइडेंटिफाई कर सको कि क्या चीज़ आपके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, कौन सी चीज़ एक्चुअली पढ़ने लायक है। अगर आप कोई बुक रीड कर रहे हो इसका मतलब ये नहीं कि आप उसको वर्ड टू वर्ड पढ़ोगे, उसमें से आपका क्या लर्निंग आउटकम निकलेगा, वो स्किल डेवलप करना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जो कि अगेन आपको ओवर द लाइफ हेल्प करेगी। इसमें कह सकते हैं कि सिर्फ लिटरेसी मैटर नहीं करती, जो हम लर्निंग कर रहे हैं या जो मेंटली हम डेवलप कर रहे हैं अपनी कैपेसिटी को और जो चीजें सीख रहे हैं वो ज्यादा मैटर करती हाँ, कि किस तरह से हम उसका प्रयोग कर रहे हैं वो ज्यादा इम्पोर्टेंट है। पढ़ना सीखना वो सीखा जा सकता है, लेकिन उसको किस तरह से अपने यूज में ला रहे हैं, कहाँ उसका प्रयोग कर रहे हैं, वो उस पर ज्यादा फोकस करने की जरूरत है कि वो सही तरह से हो रहा है या नहीं हो रहा। है।
दिव्या बोलो। मेरी स्क्रीन हाँ, स्क्रीन लैग हो रहा है आपके में। पारदर्शिता, व्यवस्था, ईमानदारी, प्रयास व जन भागीदारी से देश के सबसे कम हुई गरीबी। ये है कि नीति आयोग की रिपोर्ट देखी थी हमने, जिसमें दिखाया गया था कि 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर लाया गया है। तो उसके लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? पारदर्शिता, ट्रांसपेरेंसी। एक इस तरह का सिस्टम होना चाहिए जिसमें पूर्ण रूप से ट्रांसपेरेंसी हो, ईमानदारी हो, जन भागीदारी हो, तभी उसको कम किया जा सकता है। जैसे कि हमने देखा था कि जो आयुष्मान भारत कार्ड है उनको किसान क्रेडिट के साथ जोड़ा जा रहा है, ताकि जो मिनिमम सुविधाएं हैं वो उन्हें दी जा सके, जिसका लक्ष्य रखा गया है कि 100 करोड़ लोगों को उसके साथ कनेक्ट करना है। उसके अलावा ये था कि जो विकास रथ यात्रा चल रही है, जिसे 70 से 80% पंचायतों तक पहुंचाया गया था कि ग्रास रूट लेवल पर काम किया जा सके और सभी को उनका लाभ मिल सके। इसके अलावा देखते हैं कि 4 करोड़ से अधिक लोगों के साथ स्वास्थ्य प्रशिक्षण किए जा रहे हैं, जिसमें टीबी जैसी बीमारियों का इलाज किया जा रहा है, प्रशिक्षण किया जा रहा है, ताकि जो 2025 तक टीबी मुक्त भारत बनाने की जो टारगेट रखा गया था उसको पूरा किया जा सके। इसके बाद यही है कि पीएम किसान को भी जोड़ा जा रहा है आयुष्मान भारत कार्ड के साथ, और जो उसकी बीमा राशि है उसको बढ़ाया गया है, ताकि जो और बीमारियां हैं उनका भी इलाज किया जा सके। तो वो सभी के प्रयास से होगा।